Fine. From row section, one child come forward. First bench, beta. Yes, first bench. Please come forward. Tell me what you have read in this chapter. क्या क्या पढ़ा है अभी तक आपने? In general, not in order. Otherwise, क्या क्या आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है? उसके ट्रायंगल के बारे में क्या क्या पढ़ा है? Right? Can you tell me? Very good. आजो आजो. Come to the mic. Mic on करो. Ma'am, we have learned about the properties of angles like angle sum property, corresponding angle, alternate angle, co-interior angle, exterior, interior, etc. ट्राइंगल में और क्या पढ़ा है? और भी पढ़ा होगा ना? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ी है आपने? इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिंग ट्राइंगल, Equilateral, स्केलिंग ऑल्सो, इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? करेक्ट, यू हैव रेड इट. ओके, सिट डाउन. Good. Then we can do this worksheet nicely. Fine. I'll be asking you, be ready, all of you. First question is, we are going to do assertion reason. I want to see how much you know. Like, okay, before starting the other questions, let us do assertion reason first of all. See, first one is, in an equilateral triangle, all angles are equal. In an equilateral triangle, all angles are equal. If yes, raise your hand. Very good. No doubt. Yes, you have read. Then write the answer also quickly. Assertion, you know, it is true. Reason, they are saying each angle in an equilateral triangle is 60 degree. क्या हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है या फिर डिफरेंट होता है? Is it 60 degree? Suppose you have an equilateral triangle. ओके, तीनों में आपके पता है कि 1 2 3 ये तीन एंगल्स हैं और ये एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल. इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, you know angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. तीनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है. One more property you have read कि if we in a triangle हमारे पास ये two sides equal हैं तो उनके angles भी equal होते हैं. Have you read this? 1 is equal to 2 होता है. Do you know this property? If two sides are equal, then these two angles are also equal. Do you know it? Raise your hand. Do you know? Okay, then you should know it. Okay, write down. If two sides are equal, write down note. Note. If two sides of a triangle short form में लिखो अपनी knowledge के लिए. If two sides of a triangle are equal, then angles on the opposite sides are also equal. इसका मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा है on the opposite sides. Please write down, this is most important point. If two sides of a triangle are equal, then angles on the opposite sides are also equal. That is, ये ट्राइंगल ड्रॉ करो साथ में. ऊपर वाला अभी छोड़ दो, पहले ये नोट को देखो जरा. नोट के साथ ये एंगल ड्रॉ करो, ट्राइंगल ड्रॉ करो ये वाला. इसके बारे में पहले तो लिखो. यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट. ये बहुत ज्यादा यूज होता है. So what is the meaning of that? Two sides of a triangle are equal. That is, if AB is equal to AC, then
अपोजिट एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय AB की अपोजिट एंगल कौन सा है? कैन यू सी AB के अपोजिट? AB side is this. You can see very clearly. This is AB side. AB के सामने वाला साइड, अपोजिट साइड पे कौन सा एंगल है? AB के सामने, which is that angle 2. और AC के सामने कौन सा है? Opposite of AC, that is angle 1. ठीक है? Then angle 2 is equal to angle 1. Draw this diagram, draw these arrows, which is telling you कि AB के opposite angle 2 है और AC के opposite angle 1 है. ठीक है? इट हैपन्स इन ऑल द ट्राइंगल्स, जहां जहां आपको इक्वल साइड्स दिखेंगी उनके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. दैट इज अ फैक्ट. यू कैन यूज इट डायरेक्टली इन द क्वेश्चंस. ठीक है? बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वी नो दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल. यहाँ पे 1 एंड 2 इक्वल है, यहाँ पे 2 और 3 इक्वल है, 3 एंड 1 इक्वल है. इसलिए सारे के सारे एंगल जो है 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है. रीजन में आपका आएगा 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री. ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है. व्हाई दे आर इक्वल? बिकॉज उनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है. दिस इज द रीजन यू गेट इट एज 60 डिग्री. क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिखी है? टू साइड्स की. तो टू साइड्स, कभी हम ए बी और ए सी ले रहे हैं, कभी हम ए बी और बी सी ले रहे हैं, कभी हम बी सी एंड ए सी ले रहे हैं. चूज एनी टू साइड्स. You can say angle 1 is equal to angle 2, angle 2 is equal to 3, and 3 is equal to 1. Based on that, all the three angles are equal. Okay? And their sum is 180, sum तो 180 डिग्री रहता है. तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 times angle 1 is equal to 180 and angle 1 is equal to 60. I wanted to tell you कि 60 डिग्री कैसे आया है. ठीक है बेटा? So this is your sixth question की ऑप्शन क्या आएगी? A. Since we are talking about equilateral triangle. ठीक है? ऊपर साइड्स की बात कर रहे हैं और एंगल्स की बात कर रहे हैं कि एंगल्स इक्वल है. नीचे हम बता रहे हैं कि ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. ईच एंगल इज दे आर हैव द सेम वैल्यू. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 इज ए ऑप्शन. कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Assertion: a triangle with sides 3, 6 and 6 centimeter is a scalene triangle. Scalene triangle. What kind of triangle is this? Sulfur section. Sulfur section, roll number 12. Please come and tell me what kind of triangle is this. क्या properties होती हैं इसकी scalene triangle की? And all sides are of different length. All sides are Of different length. different, of different length. Yes, scalene triangle होता है सारी की सारी अलग अलग है. तो ये क्या होगा? इसका assertion क्या होगा फिर? True or false? False. False. Very good. Sit down. The assertion is false. Reason. A reason is in scalene triangle all the sides are unequal. अभी अभी आपने बताया. So this is true. Option will be D. Question number 8. If one angle of an isosceles triangle is 90 degree, one angle of an isosceles triangle, you have to pay full attention on the name of triangle, isosceles triangle, in which two sides are equal. Okay? If one angle of isosceles triangle is 90 degree, then measure of other two is 45 degree. Now this is 90 degree given. तो 90 डिग्री इधर भी हो सकता है, अदरवाइज ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 90 डिग्री आपको दिया हो. ये ऐसा भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है. Now tell me one thing. Can this side, ये जो मैंने यहाँ पे ABC ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या AB is equal to AC हो सकता है? Is it possible?
कैन आई राइट इट लाइक दिस, ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट एंगल ट्राइंगल में आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल को क्या हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो गए और यहाँ पे 90 डिग्री है। इज इट पॉसिबल? थिंक एंड टेल मी, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इक्वल है? जिनको लगता है हो सकता है हाथ खड़ा करो, मुझसे यस। हु आर कंफर्म कि नो ही होगा उसका, दे कैन नॉट बी इक्वल, रेज योर हैंड। यस, वेरी गुड, रो सेक्शन लास्ट, आई कैन सी योर हैंड, प्लीज आगे आओ, मेरे को रीजन बताओ। यू आर टेलिंग नो, दे कैन नॉट बी इक्वल, व्हाई? ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, आई वांट टू चेक कि ये इक्वल होगा कि नहीं। क्योंकि अगर टू साइड्स इक्वल होंगी, उनके दोनों बीच वाले एंगल इक्वल होंगे। हाँ इक्वल होंगे, बट मैं पूछ रही हूँ कि क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी हो सकता है किसी राइट ट्रायंगल में? नो। नो तो सब बता रहे हैं, मेरे को पता है कि एवरीबडी इज नोटिंग देयर हेड्स कि हाँ नो, बट व्हाई? ओके, एनीबडी एल्स? ओके, बैठो बेटा, बैठो, अभी आप 7th क्लास में हो, आपके ट्रायंगल का अभी डिटेल में शुरू हुआ है। बेटा, डू यू नो दिस इज हाइपोटेन्यूज? ये जो ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल, अगर आप 90 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हो, यू नो दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। आपने पढ़ा है इस चैप्टर में हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज हाइट और परपेंडिकुलर, कुछ भी बोल लो इसको। हैव यू रेड अबाउट हाइपोटेन्यूज? हाथ खड़े करो। यस, ओके, हैंड्स डाउन, hands down. Write down one more note. Write down note. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखने जा रहे हो, यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, राइट एंगल ट्राइंगल, in which you will show this is 90 degree. Write down A, B, C. Write down hypotenuse. See the spellings. Hypotenuse. This is base. This is perpendicular. ठीक है, परपेंडिकुलर है, हाइट है, एक ही बात है। जब हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनता है, जहां पे परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है, वहां पे हम उसको हाइट भी बोल सकते हैं। एंड यू मस्ट नो इट कि 90 डिग्री के सामने वाला, प्लीज ये एरो ड्रॉ करो, एरो ड्रॉ करो विच इज टेलिंग यू एंड साइड इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री। राइट डाउन नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइड अपोजिट। अपोजिट का मतलब आपका एरो दिखा रहा है वो, अपोजिट का मतलब उसके बिल्कुल सामने वाला। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हमेशा उसकी पोजीशन फिक्स है। ये नहीं कि कभी कभी आप बीसी को हाइपोटेन्यूज नीचे वाले को बोल दोगे, कभी इसको बोल दोगे। हाइपोटेन्यूज की पोजीशन फिक्स है। कहां पे है वो? 90 डिग्री के सामने। प्लीज राइट डाउन, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये गलती होगी तो आपकी बहुत मिस्टेक होने वाली है बाकी चैप्टर क्वेश्चंस में भी। सेकंड थिंग इज hypotenuse is the longest side, is the longest side। सबसे लंबी साइड होती है ये बाकी साइड से, हमेशा। बेस और हाइट आपस में हो सकता है इक्वल कभी हो भी जाए, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी भी किसी के इक्वल नहीं होता। दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसको अंडरलाइन करो, ये किसी से मैच नहीं करता, हाइपोटेन्यूज किसी से मैच नहीं करेगा। और इसी की कंडीशन जो हमारी होती है, दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, जो होता है वो ए बी स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर के, बी सी स्क्वायर के इक्वल होता है।
इसका नेम लिख लो, फिर मैं देखूंगी आपको यूज हो रहा है कि नहीं इसका। अभी फिलहाल इसका नेम लिख लो, दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए अभी इसको लिख लो। अगर आपका पाइथागोरस नहीं भी वर्ड यूज हो रहा, इट विल बी यूज लेटर। अपनी नॉलेज के लिए इसको 3 पॉइंट्स आपके नोट में आ जाने चाहिए कि ये सब एक राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है विच नेवर चेंज। ओके, नाउ टेल मी बाय योर नॉलेज, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही थी कि क्या ये दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं आपस में किसी राइट ट्रायंगल में? क्या ऐसा हो सकता है? इफ यू अग्री कि नो, रेज योर हैंड, जिनको लगता है कि नहीं हो सकता, कभी भी ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं हो सकती। यस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गर साइड होती है। आपको पता चल चुका है, तो हाइपोटेन्यूज किसी से भी मैच नहीं करेगी। ठीक है बेटा, सो प्लीज राइट दीज प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। एसर्शन आपका क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8, assertion. They are saying if one angle of an isosceles triangle is 90 degree, isosceles triangle हमने ड्रॉ किया, you also draw it. isosceles triangle मैं अगर ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो कौन सी साइड इक्वल होंगी? सिर्फ ये दोनों। ठीक है, देन मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स, बाकी दोनों एंगल कैसे होंगे? एंगल 1 एंड एंगल 2। क्या उनकी डिग्री 45 डिग्री होगी? मेजरमेंट उनका 45 डिग्री होगा। let us solve it। लिखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 90 डिग्री जो आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, यू नो इट, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। एंड यू नो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि अभी अभी हमने बताया था कि अगर टू साइड्स इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल दो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, 1 इज इक्वल टू 2 है, तो फिर क्या करोगे? कैन यू डू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइंड आउट एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। 145 है तो एंगल 2 भी 140 सॉरी 45 होगा, बोथ आर इक्वल। प्लीज राइट डाउन। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको प्रॉपर नोट करो बिफोर टेलिंग ट्रू और फॉल्स। एंड दीज थिंग्स विल बी यूज्ड इन योर नेक्स्ट क्लासेस आल्सो। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क हियर? सेम चीज हमने अप्लाई की थी कि अगर टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो उससे हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, सो आपकी फिर डी की सॉरी 8 की क्या ऑप्शन बन रही है? 8 का असर्शन क्या बनेगा, ट्रू या फॉल्स? अगर ट्रू है तो हाथ खड़ा करो। अब तो आपने सॉल्व भी कर लिया। इज इट ट्रू? यस, दिस इज ट्रू, पूरा का पूरा आपका ट्रू है। अभी अभी आपने सॉल्व करके दिखा दिया। assertion is true। reason, in an isosceles triangle two sides are of equal length। कोई डाउट नहीं है, वो तो अभी अभी आपने बताया ही है। रीजन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन क्या आएगी बेटे? टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑप्शन क्या आएगी इसकी? ए, क्योंकि ऊपर भी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें टू साइड्स इक्वल है, और नीचे भी हमारी उसी की प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। ठीक है,
चलो कम टू एमसीक्यू नाउ. हैव यू रेड अबाउट मीडियन? डू यू नो मीडियन क्या होता है? ओके. डू यू नो व्हाट इज एन ऑल्टीट्यूड? हाथ खड़े करो. ऑल्टीट्यूड का नेम सुना हुआ है आपने? ये these are most important things in triangle. Okay, please write down first. पहले सब्जेक्ट before starting MCQ write down important things. दोबारा से कैपिटल लेटर्स में. These are important points. कोई भी आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, मान लो पीबीसी ट्रायंगल है, ठीक है. इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर ओवर हियर, सपोज एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस परपेंडिकुलर का अदर नेम क्या है? अदर नेम इज ऑल्टीट्यूड. ओके. एडी is perpendicular to BC. परपेंडिकुलर का साइन है ये, ठीक है. एंड ED is an altitude. Write down of triangle ABC. Write down. These things are most important to know. ठीक है. ये चीजें अगर आपको पता है, क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे आपको. दिस इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. ऑल्टीट्यूड क्या कर रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. परपेंडिकुलर क्या कर रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके. सो दिस इज 90 डिग्री एंगल. So this is becoming altitude of the triangle. ठीक है. Second thing is about this. First point, second point. Draw one more triangle. फ्री हैंड से ज्वाइन करो, कोई बात नहीं. You don't have scale at this time. A, B, C. यहाँ पे I am drawing a line AD. तो AD क्या कर रही है? इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है. अभी AD की शेप मैंने थोड़ी सी स्लांटिंग बनाई है, तो हो सकता है कभी कभी किसी ट्रायंगल में आपको स्ट्रेट भी दिख जाए. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा ऐसा ही होगा. इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो. बट वो क्या कर रही है? बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. राइट. यहाँ पे प्रॉपर्टी थी कि एडी ने 90 डिग्री एंगल बनाया है. यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि एडी क्या कर रहा है? बेस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ठीक है. यू कैन राइट डाउन हियर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, दोनों का 3 सेंटीमीटर है. यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल है. तो इस केस में एडी को क्या बोलेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ एडी? डू यू नो? राइट डाउन. इफ AD divides the base किसको बोल रहे हैं हम? BC in two equal parts, then if AD divides the base BC in two equal parts, then AD is called median. Median of किसका? ट्राइंगल ABC. AD जैसा काम करेगा वैसे ही उसका नेम चेंज हो जाएगा. Right? Many children are writing very seriously. I'm happy to see. Okay, and because these things you are going to use in your questions in 7th, 8th, 9th, 10th, all the classes. Very meaningful words. Okay, बेटा? You should know. अभी 7th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है आपका ट्रायंगल के बारे में, आप डिटेल में पढ़ रहे हो. थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगी चीजें ये. These are new for you.
but very useful. ठीक है, now you will never forget कि median क्या करता है और altitude क्या करता है. नाम उसका अलग है और ना उनका प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है उनकी. जो फॉलिंग ऑन द बेस जो है वो दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ फॉलिंग. यहाँ पे मैंने 90 डिग्री लिखा है बट यहाँ पे कुछ कोई एंगल नहीं लिखा. हमें नहीं पता वो क्या एंगल बना रहे हैं. हो सकता है कभी 90 बना भी लिया हो. वंस वाइल किसी क्वेश्चन में 90 भी बना लिया और वो इक्वल भी कर दिया. इट इज बाय चांस. ओके, बट एक्चुअली जो उसका मीडियन का काम है वो है बेस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक है, तो टेल मी अबाउट द फर्स्ट एमसीक्यू. First is if we join a vertex to a point on opposite side. Everybody read the question. See MCQ first question. If we join a vertex, what do you mean by vertex? Do you know what is vertex in a triangle? Very good. Daffodil section. Daffodil section. Roll number 10. Who is roll number 10? आ गया. कोई हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. Let us draw a triangle. मैं यहाँ पे ट्राइंगल का नेम लिखती हूँ DEF. Can you tell me where are the vertices of the triangle? One is called vertex. ठीक है, अगर एक की बात करें तो हम बोलेंगे वर्टेक्स है. अदर वन, अगर हम तीन की बात करें तो उनको बोलेंगे हम वर्टिसेस. बता सकते हो बेटा वर्टेक्स क्या है इसमें? कोई एक वर्टेक्स का नाम बताओ. जो फिगर मैंने ड्रॉ की है वहां से देख के बताओ. वर्कशीट को छोड़ दो. प्लीज लुक एट माय फिगर. टेल मी कि वर्टेक्स कौन कौन सा दिख रहा है आपको इस ट्रायंगल में. वर्टेक्स. ओके, sit down. Sit down. Row section. माइक ऑफ करो. Row section. Have to please raise your hand who know what is vertex. You don't know. Vertex is the corner. Vertex का मतलब corner. कॉर्नर तो दिख रहे होंगे ना आपको. ट्राइंगल में कॉर्नर कौन कौन से हैं? कौन कौन से कॉर्नर्स हैं? D, E and F. ठीक है, vertex is one vertex and vertices. If I talk about vertices, this is plural of a vertex. ठीक है, अब आपको नेम भी पता होना चाहिए कि हम कैसे उनका नेम बुलाते हैं. वर्टिसेस जो वर्ड है इज प्लूरल ऑफ अ वर्टेक्स. वर्टेक्स का मतलब किसी एक के पॉइंट के बारे में, एक कॉर्नर के बारे में बताओगे. लोटस सेक्शन. व्हाई चिल्ड्रन आर मूविंग? एवरीबडी लुक स्ट्रेट. वर्टेक्स इज वन कॉर्नर. वर्टिसेस मींस मोर देन वन. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आपका क्या था कि एक आपके पास ट्रायंगल है तो वर्टेक्स से आपका एक ये वर्टेक्स है. वर्टेक्स से on the opposite side which divides that side in the ratio 1:1. 1:1 में इसको डिवाइड कर दिया. सपोज ये एबीसी ट्राइंगल है. यहाँ पे आपके पास डी है. 1:1 का मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा. तो 2/2 क्या होगा? इज इक्वल टू 1/1. इसका मतलब 1:1. तो इसको क्या बोलोगे? अभी हमने बताया था ऊपर कि अगर एक लाइन आ रही है ऊपर से आ रही है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो वो क्या होगी? उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन या एंगल बाइसेक्टर या ऑल्टीट्यूड या हाइपोटेन्यूज.
What do we call it? Lotus section. Row number 2. Please आगे आओ. माइक ऑन करो. हाँ जी बेटे, इसको क्या बोलोगे आप? माइक ऑन करो. माइक ऑन करो बेटा. हाँ ठीक है. अगर हम वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 1:1 में कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड या फिर हाइपोटेन्यूज? व्हाट डू वी कॉल इट? Median. Very good. Please sit down. Very good. You have come to know the name. So ये ऑप्शन जो है आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन है ए. सेकंड क्वेश्चन इज 2 trees 7 meter and 4 meter high stand upright on a ground. Circular section, many children are moving here and there. What is the point, beta? What are you doing? Sit still now. Sunflower section, I can see you. Okay. See the second question. 2 trees 7 meter and 4 meter high stand upright on a ground. You have to draw this diagram. Draw it over here. 7 meter and 4 meter. You also draw it in the notebook. Yes, good. We will discuss the answer. Two trees are there, 7 meter and 4 meter high. If their bases are 4 meter apart, bases are, base तो इधर ही होगा उसका, there are 4 meter apart, right? Then the distance between their tops, you know, one is here and other is here. You have to find this one. This distance you have to find out. इसका name लिखो. This is AB, which is first tree, जिसकी 7 meter height है, and other tree is CD, जिसकी 4 meter height है. ओके, आपको डिस्टेंस निकालना है AD. तो उसके लिए अब क्या करोगे? यहाँ पे इसको ज्वाइन करो. ड्रॉ वन मोर लाइन. टेक अ पॉइंट E over here. Do it in proper question form. AB is equal to 7 meter. BC is equal to 4 meter. And CD is equal to 4 meter. From the figure, can you tell me कि ED की लेंथ क्या होगी? I think sunflower section में there is no teacher, है ना? Sunflower section, there is lot of disturbance in your class. First bench girl, please come forward. Sunflower section, please आगे आओ. First girl. Middle row. Very good. आगे आओ बेटा. Sunflower section, can you hear me? I want to see everybody writing along with me. Second bench boy, I can see you. Sunflower section, bete. Sunflower section में there is a teacher? Yes or no? You are doing very interesting thing. Okay, please look straight, all of you. And these are new questions for you. See here, beta. What is ED? Can you tell me कि ED की length क्या होगी? ED is matching to your BC. It will also be 4 meter. You can write it yourself. ED is also 4 meter. Okay, we have to find AD.
ED की लेंथ हमें निकालनी है. One thing which is most important is given to you, beta. These two trees are standing upright. Upright means they are making 90-degree angle with the base. Of course, this will also be 90 degree. You can write it in your figure. Right? And you know, DC is 4 centimeter, so 4 meter. BE will also be 4. This is equal to 4. ये 4 है तो ये भी 4 होगा उसके सामने. You can see it very clearly. And what it will be? AE. Find out and tell me what is AE. Sunflower section, I want to hear from you. Second bench boy. Second bench boy, please come forward. Tell me what is AE. AE की लेंथ कितनी होगी? I'm explaining once more. Listen to me. I told you this whole length is 7. This is 4. Right? इसके सामने वाली ये भी 4 होगी. We wrote it here. What is the length of AE? यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ कितनी होगी? Can you tell me? मॉड्यूल में कुछ भी नहीं है. Look here. कुछ भी नहीं है. मॉड्यूल, don't see the module. The figure only. 3 मीटर. कैसे निकाला आपने? Did you hear anybody? किसी ने पीछे से बोला, आपने मुझे बता दिया? Is it like this? नहीं. ओके, चलो मेरे को बताओ फिर 3 कैसे आया? Good, good. It's good. Okay, sit down. It is 7 meter minus 4 meter is equal to 3 meter. ठीक है, ऊपर से आपको पता चल गया कि AE की जो लेंथ है that is 3 meter. ठीक है बेटा, you know we have to find AD only. If we have to find AD, तो we will be talking about only this triangle. सिर्फ upper triangle की बात करेंगे. In upper triangle, you know the height, you know the base. You can find AD very nicely by Pythagoras theorem. ठीक है? Now write down in triangle ADE, ED square is equal to AE square plus ED square. लिखो यहाँ पे by Pythagoras property. ठीक है, थ्योरम आपको शायद नहीं पता होगा अभी 7th क्लास में. Pythagoras property. Raise your hand. Have you read about this? Pythagoras property के बारे में आपने पढ़ा है क्या? नाम सुना हुआ है Pythagoras property का? Yes. याद नहीं आ रहा काफी बच्चों को, लेकिन I can see your hands. You have read it. Recall it. मैंने आपको फॉर्मूला में भी लिखवाया था. अभी पीछे जो हमने लिस्ट लिखी थी उसमें भी बताया था. Pythagoras property का मतलब जो हमारे पास 90 डिग्री एंगल होता है, अगर हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाली जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होती है. अभी मैंने लिखवाया था आपको. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज इक्वल टू AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर. वैल्यूज डालो इनकी. AD स्क्वायर के सामने व्हाट इज AE? दैट इज 3 स्क्वायर एंड ED आपके पास है 4 स्क्वायर. You find it now. Calculate करो. It is equal to 9 plus 16 which is equal to 25. 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 into 5 is 25. That is equal to 5 square. We call it square. जब power 2 होते हैं तो हम इसको स्क्वायर बोलते हैं. It means AD you are getting it as 5 meter. ठीक है, आपके ऑप्शंस में ये बी ऑप्शन आ रही है. एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट orally to be done. It's not that you are reading the question and telling me directly what is the answer. You have to perform this calculation
Such question come in the subjective form also. Okay, beta? So this is your option B. Anything you want to ask in this question? किसी को doubt लग रहा है, किसी को कुछ problem लग रही है किसी step में? You want to ask? Put a star on this question. This is important also, little tricky also. Please revise at home once more. Okay, beta? So this was your question number 2. Rest of the question we'll do next time. Revise till here. Okay? And please ask me your doubts also next time. Please remember Pythagoras property. Please remember about median, altitude. जो new name आज आपने सीखे हैं, please recall them all. Okay? चलो, see you next time. Bye bye.